Assalamu alaikum. I welcome you in another lecture of energy systems and energy resources and utilization. The topic of today's lecture is energy systems and sustainability matrix. This lecture will be divided into three parts. Let's begin. The references are the same which we have been using in the previous lectures. Let's start with the lecture. So first of all, let's have a quick outline of the coverage we will be having in this lecture. System analysis, life cycle analysis are review, simulation models, risk analysis, and how all these are connected, and sustainability metrics. So first of all, let's discuss about introduction to system analysis. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सस्टेनेबिलिटी जब हम डिस्कस करते हैं तो इट्स अ वेरी ब्रॉड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक टू अंडरस्टैंड and it has lots of different aspects to cover from different fields. So सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हम किसी भी सिस्टम को जब एनालाइज करते हैं, आइदर इट्स इकोनॉमिक सिस्टम, चाहे वो थर्मल सिस्टम हो, चाहे वो आपके पास फ्लूइड के सिस्टम हो या एनर्जी सिस्टम्स हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि उसको हम क्वांटिफाई करते हैं. क्वांटिफाई से बात की कि हम नंबर्स निकालते हैं इन सिंपल वर्ड्स. वी गेट नंबर्स आउट ऑफ इट एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स वी टेक डिसीजंस. बट सबसे मगर इम्पॉर्टेंट बात ये एक इम्पॉर्टेंट बात और एक अनफॉर्चुनेट बात ये कि समटाइम्स हम हर चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकते. तो फॉर दैट इट्स रियली चैलेंजिंग फॉर अस to somehow quantify them, and in order to get them we have very complex models to use them. और quantification जो है वो हर चीज़ की करनी मुश्किल होती है. फॉर एग्जांपल आपके पास जो ह्यूमन हेल्थ है या आपके पास जो सोशल इश्यूज हैं उनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड सिस्टम एनालिसिस में कॉम्प्लेक्सिटी होती है. डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें टेक्निकल के अलावा इकोनॉमिक्स टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के अलावा सोशल फैक्टर्स और सोसाइटल फैक्टर सोशल सोसाइटल ला सेम एंड लीगल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. दूसरी बात कि अनसर्टेनिटी सिस्टम एनालिसिस के अंदर उसको और कॉम्प्लेक्स कर देती है कि जो चीज़ आपने प्रेडिक्ट किया है मे बी कोई और चीज़ आपके सामने आ जाती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसेस. This is the goal of system analysis, and the end results often involves very large computer codes. Computer codes में आती है कि जब हम किसी भी चीज़ को मॉडल करते हैं तो हमारे पास कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस आती हैं और मैथमेटिकल इक्वेशन जो है जब उनको सॉल्व किया जाता है तो फॉर दैट यू नीड हाईली स्पेशलाइज कंप्यूटर्स. एंड और वो जब आप उनको कोड करते हैं जब उनकी मॉडलिंग करते हैं तो आपको चीज़ें जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यूजली इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से मुराद ये है कि हम किसी सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर हम कोई पावर प्लांट लगा रहे हैं तो पावर प्लांट लगाने से पहले जो इन्वेस्टर है वो उस चीज़ को किस तरह देखेगा. देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस. पहली है गट इंस्टिंक्ट, दूसरी है स्कोपिंग स्टडी, या तीसरी जो है वो डिटेल एनालिसिस है. हम लेट्स लुक एट देम ईच सेपरेटली. सबसे पहली बात गट गट इंस्टिंक्ट्स कहती हैं कि अगर किसी भी सिस्टम को हम एनालाइज कर रहे हैं या किसी भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो आपकी गट फीलिंग क्या है या आप जो है वो डू यू फील पॉजिटिव अबाउट इट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है कि एन इन्वेस्टर लर्न्स दैट द गवर्नमेंट में प्रोवाइड अ सब्सिडी फॉर अ सोलर पैनल इंस्टॉलेशन. तो इस यहाँ पे इनिशियली उसको लगा कि अगर आप मैं सोलर पैनल इंस्टॉल करूंगा तो मुझे गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देगी या फिर गवर्नमेंट मुझे कुछ टैक्स कट्स देगी, टैक्स में कट्स देगी. तो इट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी. बट ये बिल्कुल गट फीलिंग है. इट्स ये बहुत ही कह लें, यू कैन से दैट इट्स देयर इज नो एनालिसिस इन्वॉल्व नथिंग. सो इट्स द पहली बिल्कुल बुनियादी या बेसिक चीज़ जो है प्राइमरी चीज़ ये है कि किसी भी सिस्टम को देखते हुए या तो गट फीलिंग ये कहती है कि आपके पास टैक्स कट मिल रहे हैं अगर आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं. एक और बात है कि अगर आपको ये क्या है कि पाकिस्तान के पास कोल रिजर्व बहुत ज़्यादा है, तो गट फीलिंग कहती है कि व्हाई नॉट यूटिलाइज देम. तो ये एंड देन प्रोड्यूस एनर्जी. तो अभी हम आगे जा ही नहीं रहे कि हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कोई क्वांटिफिकेशन नहीं कर रहे कि नंबर्स आए और ऑन द बेस ऑफ दोज नंबर्स हम ये डिसाइड कर सकें कि वो इन्वेस्टमेंट या वो जो सिस्टम है वो कामयाब रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा या नहीं, फिजिबल है या नहीं. तो गट फीलिंग बिल्कुल बेसिक बात होती है. उसके बाद जो अगला लेवल है आपका वो होता है सॉरी, स्कोपिंग स्टडी. आपने याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन की बात की थी और उसमें हमने
and that is relatively that's the more detailed analysis, detailed study, जिसमें हम इसकी जो खास बात होती है कि ये काफ़ी सिंप्लीफाइड होता है, जिसकी वजह से इसमें कुछ नुकसानात भी हैं कुछ फ़ायदे भी हैं। यूजुअली हम मोस्टली लीनियर एनालिसिस करते हैं। लीनियर से मुराद ये है कि हम इसमें फीडबैक तो कंसीडर नहीं करते कि आपके पास अगर सिस्टम जो है उसमें मिसाल के तौर पर जो कॉस्ट है जो कॉस्ट है वो वेरिएबल हो सकती है, बट आप वेरिएबल भी ले सकते हैं, आप उसमें कांस्टेंट भी ले सकते हैं। आप बस फीडबैक नहीं ले रहे होते कि आप जो है जो सिस्टम है वो किस तरह बिहेव कर रहा है और उसका असर आपके सिस्टम पर, सिस्टम का आउटपुट का असर सिस्टम के इनपुट पर कैसे पड़ रहा है। वेरी फ्यू फीडबैक इफेक्ट्स होते हैं, उसको हम अमूमन इंक्लूड नहीं करते। तो ये एक बहुत सिंपल सा एनालिसिस होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के एग्जांपल में किया था, जिसमें हम बेसिक इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे होते हैं या टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, बट यूजुअली वी डू नॉट गो इन 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 डेप्थ। इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाती है किसी भी सिस्टम की, कि उसको इंस्टॉल किया या जो जब उसको रन करेंगे तो उससे क्या नुकसानात क्या फ़ायदे होंगे, आप वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और रिलेटिवली सिंपल टू अंडरस्टैंड, को समझना इतना मुश्किल नहीं होता। इसके जो मैथमेटिकल मॉडल्स बनते हैं या जो कैलकुलेशन होती हैं वो रिलेटिवली सिंपल होती हैं, इक्वेशन सिंपल इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसमें डिटेल एनालिसिस नहीं होता, बहुत सी चीज़ों को हम ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। थर्ड वन जो है वो एक डिटेल्ड सिस्टम एनालिसिस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, अज्यूम अ फेवरेबल स्कोपिंग स्टडी। आप किसी भी फेवरेबल स्कोपिंग स्टडी, जो हमने लास्ट ये वाली जो बात की थी कि हम किसी भी ऑलरेडी एक स्टडी हमने की जिसमें हमने स्कोपिंग स्टडी की, बेसिक स्टडी की, और हमने कहा कि ओके इट लुक्स फेवरेबल, नाउ लेट्स गेट टू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सेम थिंग। तो आपने उसमें जो आपने फैक्टर्स छोड़ दिए थे, अब आप उनको भी एनालाइज करते हैं और बहुत डिटेल में करते हैं। For example, in our nuclear plant example, we gave the fuel price in dollars per kg, but we can, हमने बहुत सिंप्लीफाई किया था इस चीज़ को। हम उस कॉस्ट को जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते थे, ब्रेक डाउन भी कर सकते थे, और फिर हर ब्रेक डाउन का भी कॉस्टिंग करने के बाद उसका जो असर पड़ रहा है सिस्टम के ऊपर उसको निकाल सकते थे। मिसाल के तौर पर फ्यूल कॉस्ट जो है वो हमने एक ली थी, बट फ्यूल कॉस्ट इज बेसिकली हैज़ फोर डिफरेंट कंपोनेंट विच आर माइनिंग कॉस्ट, conversion cost, enrichment cost, and finance cost. So all these costs are were accumulated in a single cost, जिसको हमने fuel cost ले लिया था। That was a simpler scoping analysis. But in a detailed analysis, maybe in these in तमाम cost का असर जो है वो differently behave करे। माइनिंग कॉस्ट जो है वो वक्त के साथ साथ बदल जाए तो आपकी प्राइस जो है वो बदल रही है, कन्वर्जन कॉस्ट वक्त के साथ बदल रही हो, विद टाइम इनरिचमेंट कॉस्ट बदल रही है, मे बी ड्यूरिंग इनरिचमेंट प्रोसेस, या आपके पास जो है वो रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हों जिसकी वजह से कॉस्ट जो है ऊपर नीचे जा रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिनको हमने स्कोपिंग स्टडी में हम इंक्लूड नहीं करते। वी यूजुअली डू अ वेरी सिंपल सिंपल एनालिसिस। दूसरी बात कि सिस्टम एनालिसिस में आप जो भी आपके पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड किया जा सकते हैं, उनको आप ले लेते हैं और उनको फिर डिटेल एनालिसिस करते हैं। यूजुअली आप डिटेल एनालिसिस से मुराद जो है इट्स आल्सो अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एनालिसिस को कर रहे हैं, so you should have some boundaries defined to in order to have a scope of the analysis, otherwise it will be a never ending process। but usually data analysis एक काफ़ी सिस्टम एनालिसिस जो है काफ़ी बड़ा लेवल पर एनालिसिस होता है, आप पूरे सिस्टम के हर फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं उसके एनालिसिस के अंदर। each of these may further finalized one or two levels हमने बात कर चुके हैं। इनपुट डाटा विल बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन। सो आपके पास में फ्यूचर प्रोजेक्शन और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आप डाटा को इनपुट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर और एनालाइज करते हैं। एनालिसिस विल अकाउंट फॉर अनसर्टेनिटीज़, ये चीज़ हमने स्कोपिंग स्टडी में नहीं की थी, मगर सिस्टम एनालिसिस में हम अनसर्टेनिटीज से मुराद किया कि मिसाल के तौर पर आपके पास रेगुलेशन आ जाते हैं जो आपने पहले से अकाउंट नहीं किए थे, टैक्सेस से बढ़ जाते हैं आपके पास सिस्टम में, और या फिर आपकी कोई कॉस्ट बढ़ जाती है फॉर माइनिंग एनरिचिंग, या आपने मे बी इसका इसका अच्छी देयर पॉजिटिव, या कॉस्ट कम हो जाती है आपकी फ्यूल की, या बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ पे नए रिजर्व्स मिल जाते हैं आपको फ्यूल के। तो वो तमाम फैक्टर जो हैं जो अनसर्टेनिटीज़ हैं आपके पास, खुदा ना खास्ता लाइक कोई हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, एंड दैट एक्चुअली वो जो हादसा या एक्सीडेंट है सिस्टम में अंदर,
पावर प्लांट के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, दैट कैन एक्चुअली हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर फाइनेंशियल बजटिंग। तो वो आपने वो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। लेट्स से कोई पॉलिटिकल टर्मोइल आ रहा है, तो वो तमाम अनसर्टेनिटीज़ जिनको आपने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया, बट देयर आर प्रोबेबिलिटीज एंड statistical analysis to have a very detailed analysis. All lower level contribution are combined to form one module of system code, the fuel cost module. तो आप करते क्या है कि एक बहुत बड़ा सिस्टम एनालिसिस में आप डिफरेंट मॉड्यूल्स कर लेते हैं। आप कहते हैं कि भाई दिस इज माय टेक्निकल मॉड्यूल, दिस इज माय फाइनेंशियल मॉड्यूल, दिस इज माय रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज माय फ्यूल कॉस्टिंग। या फ्यूल के अंदर भी जो आपने जो फर्दर छोटे छोटे आपने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं कि आपने फ्यूल कॉस्टिंग के लिए आपने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग लूँगा, और एक्सट्रैक्शन कॉस्ट अलग इंक्लूड की हुई है, इन्रिचमेंट कॉस्ट अलग इंक्लूड की हुई है, और डिस्पोजल कॉस्ट अलग इंक्लूड की हुई है। तो उन तमाम को आपने एक सिंगल मॉड्यूल फ्यूल कॉस्ट मॉड्यूल में ऐड कर लिया। बट फ्यूल कॉस्ट मॉड्यूल इटसेल्फ एक बहुत डिटेल मॉड्यूल है, जिसको आपने जिसके अंदर बहुत सारे सब मॉड्यूल्स ऐड किए हुए हैं। सो सिस्टम जो है बेसिकली इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, एंड दोज पार्ट्स हैज़ देयर सब सिस्टम्स। Critical point system analysis are not linear. सबसे important बात है linear नहीं होता, because you can have equations which are not linear and things are changing with respect to time. They include feedback effect that is really important, because as the prices go up, आपका सिस्टम जो है, लेट्स एक सिंपल सी मिसाल है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है फ्यूल की, तो आपके सिस्टम के ऊपर असर पड़ रहा है। या एनीथिंग एल्स, लाइक फॉर एग्जांपल कोई हादसा हो रहा है, तो उस हादसे का जो फीडबैक है आपके सिस्टम पे, या तो उसकी वजह से जो है आपकी जो पूरे परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो आप तमाम उस सिस्टम एनालिसिस में उन फीडबैक लूप्स को भी इंक्लूड करते हैं। plenty of reserves no problem, linear versus no problem, but reserves dwindle। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं, और इनिशियली रिजर्व बहुत ज़्यादा थे, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनियरली वर्क कर रहा है आपका सिस्टम, कि आपने कहा कि भाई इतना रिजर्व है मेरे पास फ्यूल का कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपने कहा भाई ये मेरा मैथमेटिकल मॉडल जो है वो लीनियरली वर्क कर रहा है कि इतना हर साल मैं इतना फ्यूल इस्तेमाल करूँगा और इस कॉस्ट पर करूँगा, बिकॉज आई हैव plenty of fuel, and that will not affect my analysis. But for instance the same reserves start dwindling या ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके पास अदर मसाइल पैदा हो सकते हैं कि आपके पास जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो बढ़ जाए, और किस रेट से बढ़े हमें नहीं पता। मे बी उसके साथ साथ जो है वो कि आपको यू आर नॉट सर्टन कि कोई नया प्रोजेक्ट नया रिजर्व आपको मिल नज़र आता है नहीं आता, या नया रिजर्व जो है वो आपके पास डिस्कवर होता है या नहीं होता। सो हाउ विल इट अफेक्ट द प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तो नो बडी नोज। दिस आर ऑल थिंग्स विच आर uncertain, and we have to have some statistical and probabilistically model in order to predict these unknown cost of the fuel. But this fuel is just an example. You can have any cost which you could think about any other factor involved in the power plant or any other system, जिसके अंदर फ्यूल के अलावा मिसाल के तौर पर आपकी जो लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स की जो सैलरीज हैं, या वो मे ऑल्दो ये बहुत ही ये बड़े इंटरनल मैटर है कि आप जो है वो सैलरी जो है वो खुद डिसाइड करते हैं, बट मे बी कल कोई रेगुलेशन आता है जिसकी बुनियाद के ऊपर कि आपने सैलरीज को ऊपर नीचे करना है, तो that all should be incorporated into a system. So it's all depend upon कि how well you define the scope of the system, कि आप बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं कि भाई इसके बाहर मैं नहीं जाऊँगा। Let's move on. System analysis code contain large number of complex model। कोड से मुराद के जो आप मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल कोडिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर कोड्स कर रहे हैं, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल्स हो जाते हैं। मैंने अभी बात डिस्कस की है कि फ्यूल मॉड्यूल्स हैं एंड अदर मॉड्यूल्स। ऑफन हार्ड टू अंडरस्टैंड द होल पिक्चर। इनिशियली इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप एक ओवरऑल पिक्चर को सिस्टम एनालिसिस के जरिए मालूम कर लें, बिकॉज आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज थिंग्स आर रियली कॉम्प्लेक्स, और it's difficult to understand the whole picture at a time। should be more reliable than a scoping study, that's pretty obvious। scoping study जो है वो बहुत बेसिक या बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल की स्टडी होती है, जिसमें आपके पास एक ओवरऑल पिक्चर आती है कि आप तस्वीर देखते हैं, ओके यार दिस लुक्स नाइस, लेट्स स्टार्ट इट। and then when you get into the system analysis, detailed system analysis, you get the pictures which may not be as feasible as it was looking in the scoping studies। so this is really important। complex system analysis codes में आप बहुत ख्याल करना पड़ता है, because maybe you 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 could have made some mistakes in coding it or modeling it, which can impact the whole the result of the whole system। so this is really important।
Many flavors of system analysis. Investors are not the only people to carry out systems एनालिसिस ज़रूरी नहीं सिर्फ इन्वेस्टर्स हो इन्वेस्टर फोकस ऑन फाइनेंशियल टर्म्स मिसाल के तौर पर दे आर जस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है वो सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में बात करता है कि फाइनेंशियली जो है मुझे मुझे क्या कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है मुझे कितना रिटर्न है और कितना मुझे जो है वो बाद में अनसर्टेनिटी कॉस्ट आ सकती है या पैसे बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं but at the same time we have other aspects of the system analysis. We have technical system technical credibility, schedule, costing, environmental, these are technical aspect जो कि engineers देख रहे हैं या architectural या फिर जो भी designers हैं वो देख रहे हैं. Environmental impact एक बहुत important चीज़ है जिसको finance जो इन्वेस्टर्स है वो इंक्लूड नहीं करेगा ऑल्दो के फाइनेंशियल मैटर्स में वो वहाँ पे कॉस्टिंग आ रही है जो कि इनडायरेक्टली लिंक है इन्वायरमेंट के साथ बट उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको इंक्लूड करना इंजीनियर या साइंटिस्ट का काम है कि वो वेस्ट डिस्पोजल किस तरह हो रहा है पोल्यूशन कैसे फैलेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट क्या होगा सिस्टम के ऊपर तो इन तमाम चीज़ों को इंक्लूड को भी सिस्टम में आपने एनालाइज करना है ओवरऑल पिक्चर लेने मे बी things which are financially feasible may not be technically and environmentally feasible or healthy. सो एक और इम्पॉर्टेंट बात है गवर्नमेंट फोकस ऑन पब्लिक गुड तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अगर गवर्नमेंट का जो फोकस है गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो भी आपके सिस्टम में समहाउ आपने उसको रिफ्लेक्ट किया हो अदरवाइज आप एक बहुत अच्छा सिस्टम बना लें और गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है उसके फेवर में तो दैट विल नॉट वर्क so moving on government has a tough job this is really important because government के पास गवर्नमेंट की जॉब बड़ी टफ होती है इसमें क्योंकि दैट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी एंड हैज़ अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट जिसमें आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाए रखना है एंड एट द सेम टाइम जो बाकी फैक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट हेल्थ एंड द सेफ सिक्योरिटी उसको भी ख्याल रखना है तो देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग एक बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल एक रीसेंट एग्जांपल ये कि भाई कोरोना के आजकल जो कोरोना के मसाइल चल रहे हैं उसमें गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन खोल रही है तो एक उसका बेसिक वजह ये है कि जो हेल्थ और इकोनॉमी के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ रहा है बिकॉज अगर मैं एक तरफ झुकाव होगा सिस्टम गवर्नमेंट का तो व्हाट वुड हैपन जो इकोनॉमी वुड कोलैप्स और हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं तो सिमिलरली किसी भी सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका काम सबसे मुश्किल होता है कि वो एक बैलेंस क्रिएट करती है क्रिटिकल रोल इज़ इंट्रोड्यूसिंग रेगुलेशन लॉज बनाती है रेगुलेशन बनाती है इसको हम आजकल एस ओ पीज़ कह रहे हैं या एस ओ पीज़ तो बहुत बेसिक्स की बहुत छोटी टर्म्स है बट यू कैन हैव very detailed regulations and laws being applied to systems which are energy based energy systems or power plants and etc sometimes a good job sometimes a bad job good job kya ho sakti hai these are all subjective things so it all depends upon from which perspective you are actually seeing them आपने good job could be like आपने scrubbers on coal plant आपने कहा कि you should have installed scrubbers which reduces the carbon sulfur dioxide these are some of the like thousands and millions of examples a fee for nuclear waste disposal आप गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है कि भाई जो न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल है न्यूक्लियर प्लांट्स है उसमें जो है वो इन्वेस्टर है या फिर जो मालिक है वो कुछ फीस पे करेगा एंड दैट्स अ गुड जॉब दीज आर गुड रेगुलेशन और गुड practices which are being imposed by the government but bad job could be tobacco this is a very good example because although government is making lots of money from the taxation on the or the income from tobacco but in from a broader perspective it is killing people and it is having a toll on the मेडिकल सब फैसिलिटीज़ और जिसका असर गवर्नमेंट लोगों के ऊपर पड़ रहा है और गवर्नमेंट जो है वो उससे कुछ कमा ज़रूर रही है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एग्जांपल जिसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो किसी एक फेवर में झुकती हैं तो उनका असर दूसरी तरफ बढ़ता है तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन किस पर्सपेक्टिव देख रहे हैं वो perspective अगर if you are seeing from an economic perspective tobacco is very good but if you are seeing from a public health perspective it is really harmful and it should be banned right moving further रेगुलेशन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कम टू डिफरेंट कंक्लूजन ये मैं अभी बात कर चुका हूँ इन रिगार्डिंग एनर्जी प्रोडक्शन कुछ कोई जो इन्वायरमेंट बिल्ट इन बायस होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर आपका झुकाव किसी एक तरफ होता है कुछ लोग सिस्टम को एनालाइज करते हैं एंड दे गिव मोर वेटेज टू द environmental aspects some give more weightage to the economic advantages or the monetary advantages
कोई जो है वो उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करेगा, कोई उसके लॉन्ग टर्म देखेगा। तो तमाम एक बाइस्ड हर 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 सिस्टम में होता है जो भी उसको डिज़ाइन कर रहा होता है। रेगुलेटर्स मस्ट टेक इनटू अकाउंट दीज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो रेगुलेटर्स जो हैं वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हैं कि भाई तमाम चीज़ें, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स तमाम जो हैं वो उनका उन सबकी जो है जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो रही हो समहाउ, एंड देन दे शुड बी बैलेंस। एंड दैट्स द पार्ट दैट गवर्नमेंट चिप इन करती है और गवर्नमेंट को मसाइल पता होते हैं, या फिर उसके लिए चैलेंजिंग जॉब होती है। Government regulators should be focused on public good, and that's the basic job of the government, to look forward for the public good. If something is feasible in all the aspect but it is causing public damage, then that should not be processed, that should not be allowed. They are influenced by lobbies from, this is really important because sometimes जो आपके पास governments होती हैं उनको lobbyists जो या फिर वो लोग जो that actually put their agenda forwards, they actually sometimes influence the government. For example, greedy financial institutions, those guys who are like really into the money making business, and they don't want that those systems to to get cancelled जहाँ से पैसा बन रहा है। और this is actually अगर if you are interested in economics and finance, या आप global economy को समझते हैं तो या corporations को, तो you will definitely have, you can definitely understand what I'm trying to say. Let's say in US this is a very common thing, जहाँ पे इलेक्शन से पहले आप लॉबिस्ट होते हैं जो कि अपनी जो पॉलिसीज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनी कंपनीज को फ़ायदा बचाने के लिए ऐसे लोगों को फंड करती हैं मिलियंस ऑफ डॉलर, जो कि उनकी एट द आफ्टर द इलेक्शन, आफ्टर दे गेट इलेक्टेड, वो उनके हक फेवर में पॉलिसीज बनाएं। There are so eco freaks is another very another extreme extreme side. Those are who are like who are not एक तो वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि भाई सब कुछ मतलब the economy should run and the money is the only business, so at the cost of whatever environment or health whatever. But the eco freaks are at the other end of the other end of the spectrum. They are more interested, they are extremely interested, extremely inclined towards the environment, and in that और उसकी वजह से ही होता क्या है कि वो sometimes डेवलपमेंट को रोक देते हैं, या डेवलपमेंट उनकी डेफिनेशन डिफरेंट होती है। अगर कोई क्या है कि भाई हमारी तरफ पावर प्लांट लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसका एनवायरनमेंट ख़राब होता है, तो एनवायरनमेंट ख़राब ज़रूर होता है बट एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास आपकी डेवलपमेंट ही नहीं होगी उस मुल्क के अंदर जहाँ पे आप अगर सिर्फ एनवायरनमेंट को देखेंगे। ऑल्दो there should be a balance, but that's the most difficult part of this course, yeah, this field, this topic, this sustainability is a really complex thing to understand and really complex thing to to implement. तो इसकी definition और ये तमाम जो बातें हम डिस्कस करते हैं, ये these all give you some insight at actually how difficult or how complex this subject is. Moving forward, structure of a system analysis, number of approaches to a system analysis. There are different approaches. Method below is fairly typical. एक बहुत सिंपल सा goal of the analysis, does it make sense? बहुत बेसिक सी बात है, क्या आपने जो एनालिसिस किया है वो पावर प्लांट है वो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। द एंड प्रोडक्ट अ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑल इंक्लूसिव सिमुलेशन कोड, मगर जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है सिस्टम एनालिसिस का, वो एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है जिसके अंदर तमाम चीज़ें, तमाम मॉड्यूल्स आप इंक्लूड करते हैं। Simulation code, technical aspect from a life cycle analysis, regulatory aspect, टेक्निकल लाइफ साइकिल एनालिसिस में बात किया कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हर चीज़ को आपने इंक्लूड करना है। फीडबैक इफेक्ट डालने हैं, रेगुलेटरी इफेक्ट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो टैक्स की शक्ल में हो या जो आप पेनल्टी शक्ल में इनको पेनल्टी की शक्ल में उसको इंक्लूड करना है। कंबाइन टू क्रिएट अ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये तमाम चीज़ें आपने उस अपने मॉडल के अंदर डालनी होती हैं। लाइफ साइकिल एनालिसिस बेसिकली होता है क्या है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडल टू ग्रेव, मतलब बिल्कुल फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, रॉ मटेरियल से लेके मटेरियल प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन कह लें आप, रिपेयर, मेंटेनेंस, वेस्ट डिस्पोजल, डीकमीशनिंग। सो दीज आर ब्रॉडर some broad steps in the life cycle of any on any system. For example, raw material in case of a power plant would be fuel,
And when you are constructing a power plant, the all the material which is being used, which is being used in the construction is our raw material. So the material processing of each and everything which is being used in is considered in the material processing, and that actually has some carbon footprint and economic and carbon footprint. Manufacturing these all steps is causing some damage to the environment, and has a cost, right? So distribution, repair and maintenance, this is during the operation, and then when you are running the plant, you need to dispose the waste, and the waste is, in case of a power plant, that's carbon dioxide or sulfur dioxide or any other waste which is being produced by the process. And after the end of the whole system, whole cycle, you are decommissioning it, and that actually has also a that also has a cost. And so you need to include this whole every expert in your in life cycle analysis. Accuracy, technical accuracy is good. This is really usually the part which is accurate to calculate or to quantify. हम जब मॉडल करते हैं किसी चीज़ को या डिज़ाइन करते हैं, तो हम हमारे पास नंबर्स, टेक्निकली हमारे पास नंबर्स काफ़ी एक्यूरेट आते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि वी नीड टू डिज़ाइन अ हीट एक्सचेंजर, तो यू कैन डिज़ाइन इट एक्चुअली विद वेरी वेरी गुड एक्यूरेसी. पावर प्लांट डिज़ाइन करना मुश्किल नहीं है. आप मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी. बट बेस्ड ऑन स्टैब्लिश इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ फ्यूल पर ईयर या मालूम कर सकते हैं. अमाउंट ऑफ फ्यूल निकालना मुश्किल नहीं है, अमाउंट ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप निकालना नहीं है, लाइफ टाइम ऑफ वेल्व, दैट्स प्रीटी सिंपल. दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ अ सिस्टम, जिसमें आप ये हम पढ़ते आ रहे हैं इंजीनियरिंग में कि आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं कि भाई इस शाफ्ट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए. इफ़ यू नीड टू इंस्टॉल अ मोटर ऑफ दिस साइज, यू नीड टू हैव द शाफ्ट ऑफ दिस साइज. दीज आर प्रीटी pretty straightforward और established numbers, right? तो ये मुश्किल नहीं है निकालना कि आपका पावर प्लांट में जो लेट्स स्टील इस्तेमाल हो रहा है कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए. अगर इतना बड़ा पावर प्लांट लगा रहे हैं तो आपको यू नीड दिस मच ऑफ फ्यूल. तो ये तमाम बातें, टेक्निकल एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी होती है हमारे पास किसी भी सिस्टम एनालिसिस में. मुश्किल क्या होती है आपके पास? इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, दीज आर थिंग्स विच आर डायनामिक्स और विच डू नॉट हैव एग्जैक्ट नंबर्स. ये बदलते रहते हैं. तो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ अ सिस्टम एनालिसिस इज, I would not say easy, but it's not complex. The complex part comes when you have complex से मुराद ये होता है कि आपके पास चीज़ complex and difficult has two different had different meanings. Difficult means things, you know the result, you know where you want to go, but the रास्ता मुश्किल है और आपको जगह पता है. कॉम्प्लेक्स ये है कि आपके पास जो यू कुड हैव डिफरेंट अप्रोचेस, और आपके पास जो वैल्यू हैं या वेरिएबल्स हैं वो वेरी कर रहे हैं. तो आपके पास जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी सिस्टम के, वो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आते हैं, ना कि डिफिकल्ट. सो मैथमेटिकली, बिकॉज द थिंग्स आर नॉट सर्टन, things might pop up in the future differently, and that actually makes the economic analysis difficult, or I would say complex, right? uh, Moving further, for example एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं. कॉस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूल इंक्लूडिंग स्कार्सिटी मतलब कि उसकी कमी हो रही है. एक रेफरेंस केस है, यूरेनियम जो है उसको वो $2000 पर केजी मिल रहा है. These are just basic examples. Breakdown of the MIT study, MIT के हिसाब से, MIT की एक स्टडी है, उसके हिसाब से जो 10 kg ऑफ ओर है, ओर मतलब जो आपकी जो जहाँ से यूरेनियम निकलता है, 10 किलो में से 1 kg और यूरेनियम निकलता है, and that actually cost 437. And after that you convert it, you enrich it, you fabricate it, you store and dispose it, and all these different processes cost in total of $2000 per kg of a uranium, which will be used in a nuclear power plant. So this is, now moving further, the fuel cost is actually 2000 kilogram per kg of uranium. We are producing 1 gigawatt thermal in energy, and that is actually equivalent to 2.3 exponential 10 kilowatt hour, uh, if you are producing for the whole year. So this is actually the power multiplied by the number of hours in the air.
Burn rate, this is the amount of energy per kg. So this is a, you can say, the calorific value of uranium, which is not a good, not right term. So in जो uranium जो है उसकी ये energy per unit mass है. This is the amount of uranium you use. You have energy, you have burn rate. When you divide it, you can get the amount of fuel you need to burn for the whole year to produce this much of energy. And this is the fuel cost. This is pretty simple. You multiply the fuel cost with the amount of the mass of uranium. So you need 42 millions per year. And the cost of electricity is basically 3.56 cents per kilowatt hour when you are multiplying, when you are dividing this with this. So this is the basic thing. Now moving further, what now talk about the reserves, right? 10 kg ore yields 1 kg uranium to use. If you have 10 kg of ore, you उसमें से सिर्फ 1 किलो जो यूरेनियम पैदा करता है. So the cost of ore is then 437, because यहाँ पे 437 थी ore की price. और तो 1 kg जो है वो आ जाएगी $44 per kg. Okay, now talk about the reserves. Reserves की अगर rate में बात करता हूँ, reserves, one ore reserve at this price is RI is not well known. Assume 50 years of reserves for 100 nuclear power plants. So अगर 100 nuclear plant चल रहे हैं और 50 साल तक चलेंगे तो उनका reserves कितना होगा? So you can say that 10 mf. Mf is the mass of fuel, which is the uranium, times 10 means you need to convert into the ore, because mf is the mass of uranium, pure uranium, but you have mass of ore की बात कर रहे हैं तो हम you are multiplying with 10, and you have 100 power plants and you are running it for 50 years, so you have this much of mass of fuel, and that is 5 exponential 4, and this is amount of kg of ore. So आपके पास RI जो है वो निकल के आ गया reserves. This is a very simple calculations. So आपके पास एक basic reserves, आप एक reserve estimation आ गया कि आपके पास जो ore है उसका mass कितना अवेलेबल है 50 साल के लिए. वो है आपके पास 10 exponential 9 kg of ore अवेलेबल है. मगर होता क्या है कि आपके पास जो हर न्यूक्लियर प्लांट के साथ, जब हम न्यूक कह रहे हैं, वक्त के साथ साथ उसकी जो यूजेज है वो बढ़ता है, तो आपके पास वो न्यूक्लियर जो रिजर्व्स हैं वो कम होते रहते हैं. सो अगर आप गौर कीजिए तो RC इज द रिजर्व्स, द इनिशियल चीप रिजर्व्स, एंड RI द इनिशियल रिजर्व्स है, और उनमें से हर साल माइनस हो रहे हैं. N जो है वो नंबर ऑफ रिएक्टर्स हैं, MF मास ऑफ द फ्यूल, एंड T इज अ टाइम है. तो जैसे अब T अगर मैं साल में ले लेता हूँ तो फर्स्ट ईयर में क्या वैल्यू होगी? हर साल जो है वो RC की वैल्यू जो है वो कम होती रहेगी, बिकॉज रिजर्व जो है वो हर पावर प्लांट के लिए कम हो रहे हैं. So cost of ore is increased rapidly as reserves dwindle. This is pretty obvious. आपके पास अगर जो ore की cost जो है वो बढ़ेगी जब आपके पास reserves जो है वो कम होंगे. So we are using this mathematical relation. These are the formulas which will be provided to you. So if you apply this relation, you can see that uh, the with the time, the R is the reserves and this is going downwards, and when you are and with time the cost of ore is going upwards. These are very basic things to include in your system analysis when you are having cost and reserves, cost of the fuel and reserves of the fuel, right? So for example यहाँ पे जो price है वो exponentially बढ़ रही है. So what would happen? Number of power plant may change with time. तो अगर इस सिनेरियो की बात की जाए तो मे बी आपके पास एक और नया रिजर्व दरियाफ्त हो जाए या डिस्कवर हो जाए जहाँ पे आपके पास यूरेनियम मिल रहा हो, तो मे बी एंड दैट रिजर्व्स may be used to supply the fuel to the power plant, and that might reduce the cost of the operations. नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स में चेंज विद टाइम. ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमने जो एनालिसिस किया 50 के लिए किया था, 100 के लिए किया था, तो मे बी न्यूक्लियर प्लांट्स जो हम बदल दें, एंड दैट एक्चुअली have an impact on the cost. As cost of the ore goes up, new reserves may found. Both effects have an impact on the amount of reserves. So अगर आपके पास नए प्लांट लग रहे हैं तो होता है जो है वो फ्यूल की डिमांड बढ़ जाए और पैसे फिर बढ़ जाए. तो these are all factors which are dynamic and variable when you are having on operations of the power plants. Number of nukes, three effects determining number of nukes: replacement of old nukes, replace old coal plant with carbon dioxide free nukes, uh,
use electricity demand will increase each year, meet new demand with new, for example you are नंबर ऑफ जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो कितना बढ़ सकते हैं कि आप जो है ओल्ड न्यूक्लियर प्लांट्स को नए न्यूक्लियर प्लांट्स में बदलते हैं। आपके पास कोल प्लांट्स थे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते थे, आपने कहा कि ओके गवर्नमेंट ने कहा है कि नाउ रिप्लेस देम विद द न्यू न्यूक्लियर प्लांट्स, और जो डिमांड इलेक्ट्रिसिटी और बढ़ रही है विद टाइम। सो ऑल दीज फैक्टर्स इन हैव एन इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ न्यू। सो ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ बदल सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोल रिप्लेसमेंट नंबर, आप कह रहे हैं कि 250 कोल प्लांट्स हैं, तो हम 50 साल में 40 साल में हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो 6.25 पर ईयर हम रिप्लेस कर देंगे। आपकी जो नई डिमांड है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% है, टोटल प्लान 500 थे, और परसेंट इंक्रीज जो है वो 1% इंक्रीज की वजह से आपने कहा न्यू डिमांड जो है 5% है। तो दिस कुड बी अ वेरी सिंपल रिलेशन है, द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट जो है वो एन है, कोल रिप्लेसमेंट जो है जिनको आपने कोल प्लांट्स उन्होंने रिप्लेस कर दिया विद न्यूक्लियर प्लांट, एंड न्यू कैपेसिटी जो है वो 5 टाइम एन न्यू टी के टू इज बेसिकली द change number of uh, delta n upon n, which is number of nuke plants divided by the change in nuke plant number of nuke plants divided by the initial value. So this relation gives you a linear relation which is 100 plus 11.3. Don't get into these numbers, right, because these are for example if you have initially जो existing nuke है वो 100 थे, and 250 nuclear plant जो है 40 साल में बदलने हैं आपने with 250 कोल प्लांट बदलने हैं आपने न्यूक्लियर प्लांट से 40 साल में, तो दैट एक्चुअली हैज these are replaced by a nuclear plant, and you have to install new capacity. So this is a relation that is a function of time, and the time here is in measured in years, right? So you can see that this is a linear curve कि with time जब number of power plants है वो इस तरह बढ़ रहे हैं। So this could be this simple model can be incorporated into a system analysis, which actually gives you a picture of the picture of the power plants depending upon the need and regulation being imposed by the government with time. uh, New reserves go down, cost of ore goes up, that's pretty obvious। अगर आपके पास reserves नीचे आ रहे हैं तो cost बढ़ जाएगी। cost of ore goes up, search for new ore। अगर आपके पास ore बढ़ रही, महंगी हो रही है, fuel महंगा हो रहा है, and it could be applied to any fossil fuel as well, so you need to search for the new ores। new reserves cost more than initial reserves। हो सकता है कि आपके पास जो न्यू रिजर्व्स हैं वो आपको इनिशियली आपको महंगे पड़े, इनिशियल जो आपके initial reserves थे। cost of new reserves increases but not as fast as the cost increases with dwindling river reserves। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हो सकता है जो न्यू रिजर्व्स उनके पैसे बढ़ ज़रूर रहे हैं, बट इतनी रेट से नहीं बढ़ रहे जिस रेट से अगर हम जो कॉर्ड जो हमारे रिजर्व्स कम हो रहे हैं उनके बढ़ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ जो इंक्रीज है वो कम है कंपेयर टू व्हेन यू हैव dwindling river reserve। dwindling मतलब कि कम हो रहे हैं रिजर्व्स। uh, the same relation, the simple model for the reserves is this is cost of core at t and I for initial values. So don't worry about these mathematical relation. What is important is note the feedback loops when the core value, which is the amount of core, the cost, sorry, cost, c for cost and r for the reserves, it depends upon the initial value। तो कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ जाती है जब आपके पास रिजर्व जो है वो कम हो जाते हैं। तो आर टी जो रिजर्व डिपेंड ऑन द कोर टी एज वेल। सो अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कॉस्ट बढ़ रही है तो रिजर्व भी आपके पास हो जाता है नेगेटिव, उनका जो चेंज है वो नेगेटिव हो जाए, बिकॉज नो बडी विल बी यूजिंग दैट रिजर्व्स। सो रिजर्व जो है फिर आपके कम कम नहीं होंगे। So this is actually this shows that the core the cost of ore is increasing when you have constant reserves, and that actually shows that you have a high demand but the reserves are limited, and that actually cause the that actually increases the cost of the ore. Similarly, we can have a basic economic analysis for the same thing. If you have 42 millions per year, the you can convert that into the present value by using the annual annuity relations. We will see them later in detail. So you can get a number which is 330 millions in the present value of the fuel.
So these are some of the relations which converts the get the cost of the core and the number of nuclear plants and the reserves. And by using all these relations आपके पास जो with time जो है वो cost of ore जो है वो किस तरह behave कर रही है. So the main purpose of these equations is just to explain that these relations are can be incorporated into a system analysis to get your the cost of ore, number of nuclear plants, and the reserves which will be dwindling or not with the time. सो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट यहाँ पे कॉस्ट जो है वो आप उसको बाय दिस कुड बी व्हेन यू हैव अ न्यू सेट ऑफ यू हैव अ न्यू रिजर्व्स. तो आपके पास कॉस्ट जो है वो फिर इतनी एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रही बट द कर्व इज गेटिंग हायर ऑल्दो बट the slope is relatively smaller. uh, the this present cost can go infinitely high when you have when you are when you do not have when you run out of the fuel. So these are this whole analysis actually gives you an idea about the uncertainties and the it actually it's just an example which actually gives you an idea of this is could be a one module which actually talk about the reserves cost and the reserve and cost number of nuclear plant which needs to be installed when you are designing a system. So this is one model of a system. uh, so if you have any question we can talk about in the live sessions. Don't, and we might be we will be solving some we will be seeing some case studies regarding them inshallah as well. So this is it for the example of a system analysis, and in the next class we will discuss some other aspects of the sustainability matrix. So thank you very much.